Hello everybody, welcome to Sunraj Institute of Education. Subscribe and press the bell icon to stay updated with latest videos. वेलकम बैक एवरीवन। यूजीसी सीरीज में आज हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बिजनेस को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे रेगुलेट करना है, कैसे ऑपरेट करना है, इसके कुछ सेट प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सेट रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, एक्टिविटीज हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉम्बिनेशन है इन सारे रूल्स रेगुलेशंस का, लॉज का, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपनी कंपनी को कैसे ऑपरेट करना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कौन सी थ्योरीज हैं। सबसे पहले थ्योरी है एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी में जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, दे आर दी ओनर्स, दे आर दी प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स as their agents to perform the task, to perform the activities of the organization, and board of directors जो अपनी ड्यूटीज हैं, जो अपने टास्क हैं, वो अपने मैनेजर्स को, अपने एम्प्लॉयज को डेलीगेट कर देती है। जो एजेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, दे वर्क इन देयर बेस्ट फॉर्म टू गिव more and more business to the organization, and the management must protect the concern of the investors. Next theory है हमारी stewardship theory. ये जो theory है, this theory is based on value. According to this theory, जो managers हैं, they act like guardian of the organization. They work day and night. They work hard to bring more and more profit in the organization, because according to the managers or according to the employees of the organization, if they work hard, if they bring more profit, if they earn more profit for the organization, their salaries, their perks, their incentives will increase, and it will help in their personal as well as professional growth. Third theory is shareholder and stockholder theory. According to this theory, the whole organization is treated as assets of shareholders. जो managers की major obligation है, it is towards the shareholders and their property. Organization makes sure that all the rules and regulations are being followed properly, business ethically and legally work करे. If anything goes wrong, if any destruction happens, shareholders hold directors responsible for the negligent behavior and they can sue them. Therefore, जो management है, they always carefully work, they vigilant कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म ना हो शेयरहोल्डर्स और उनके इंटरेस्ट और एथिक्स के बीच में किसी भी टाइप का कंफ्लिक्ट। Fourth theory is stakeholder theory. This theory is based on the input and output model. That means जितने भी लोग हैं, whether they are internally attached with the organization or externally attached with the organization, everybody is affected by the company's operations. जैसे आप फिगर में देख रहे हो, इंटरनल स्टेक होल्डर्स हमारे कौन हैं? एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स हैं, ओनर्स हैं। एक्सटर्नल हमारे जो हैं सप्लायर्स हैं, सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, क्रेडिटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं। Everyone is attached to the company, or everyone is attached to the organization for their own self benefit, and it is the duty of the manager to promote and manage their interest and to give company more and more profit, so that जितने भी लोग हैं कंपनी के साथ जो अटैच हैं, everyone will get their share. ये चार थ्योरीज हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, and these theories are very very important. Moving on, understand board committees कौन सी होती हैं and how they affect the working of the organization. सबसे पहली है mandatory committee. Mandatory committee is the essential part of the organization. सबसे पहले आती है audit committee.
ऑडिट कमेटी रिव्यू करती है जो भी पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, रिपोर्ट्स, कंपनी की प्रेस रिलीज and any document that comes in and goes out from the organization with the managers and independent auditors. कोई भी कंपनी में काम हो रहा है, every work that is being done in the organization is on papers. It is the responsibility of audit company to check each and every document properly. Next one is nomination committee. जो नॉमिनेशन कमेटी है वो रिव्यू करती है और रिकमेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन को जो भी प्रैक्टिसेस, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज कंपनी में चल रही हैं, whether it is beneficial for the organization or not. They also evaluate other various committees कि कमेटी में वर्क स्मूथली चल रहा है या नहीं चल रहा है. Third one is remuneration committee. As the name suggests, this committee looks into the salaries, wages, perks, benefits, bonuses, shares, pensions of the employees of the workers working in the organization. Fourth one is shareholder and stakeholder committee. This committee tries to evaluate the relationship between the shareholders and the stakeholders of the organization and release guidelines for this so that if any grievance, if any request arises in the organization, they can promptly answer. ये जो 4 कमिटीज हैं, ये कमेटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर ऑर्गेनाइजेशन में. These committees should present in each and every management for smooth and efficient working of the activities. Second is non-mandatory committees. सबसे पहले आता है compliance committee. This committee makes sure company सारे rules, regulations, policies, procedures को properly follow कर रही है in an ethical way, and they are dealing with public and monitors the company's policies with the public policies. Next is Investor Relation Committee. This committee conducts regular informal meeting with the board of directors, discuss the issues, development and disclosure of certain items, certain materials in the organization. Third one is Investment Committee. This committee assists board of directors in evaluating, revisiting the investment strategies and conduct performance evaluation annually so that organization and get clear picture of what's going on in the organization. Fourth one is Risk Management Committee. This committee provides board of directors the present scenario, future risk that may arise, and strategies organization can opt for to tackle the situation in a effective manner. Fourth one is ad hoc committee. Ad hoc committee temporary committee होती है. When some situation arises, when anything happens, उस टाइम पर एक कमिटी बिल्ड हो जाती है for a shorter period of time just to tackle that particular situation. जैसे examples हैं ad hoc committee के task force committee. This committee is formed for particular task to tackle particular situation. Second one is restructuring committee. Restructuring committee formed to take decisions about restructuring of some policies or some rules. Third one is mergers and acquisition takeover committee. अगर कंपनी प्लान कर रही है किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने के लिए या फिर 2 कंपनीज मर्ज हो रही हैं, उस टाइम पर जो डिसीजंस या उस टाइम पे जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं, उसके लिए हम बनाते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन टेकओवर कमिटी. द फोर्थ वन इज बजट कमिटी. This committee's function is to propose budget requirement in each financial year to the board of directors.
कितना फंड हमें चाहिए, कितना फंड हमारे पास है, कितने फंड की हमें फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी. दिस इज द फंक्शन ऑफ बजट कमिटी. तो स्टूडेंट्स, ये दो कमिटीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में हेल्प करती है. whenever any problem arises, whenever any situation arises, तो organization, board of directors in committee की help से they try to solve all the issues in the organization. Now moving forward to the last topic of this unit 1, ethical dilemma. Dilemma क्या होता है? Dilemma एक situation है जहाँ पे आपके पास दो या दो से ज्यादा alternatives हैं and दोनों ही alternatives practically acceptable नहीं है. And manager is forced to think whether he should take the ethical way or he should take the legal way. Ethical dilemma ऐसी situation है, is forced to choose between two or more options and neither of the option resolve the situation in an ethically acceptable way. So students, इस टॉपिक के साथ हमारा यूनिट 1 पूरा कवर हो जाता है. For any type of questions or for any queries, you can directly contact us. Links are given in description, and don't forget to hit the bell icon so that whenever our next video will come, you will get notified. And we are starting our online classes and online lectures for plus 1 and plus 2 commerce. Interested students, kindly contact us.